अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम शुजाइमान है। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में हम आज फ्लाई करेंगे फ्रॉम कैमरा का एंगल क्यों नहीं सीधा। रुको एक मिनट। अच्छा, here we go। व्हाटएवर हो गया इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, तो वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीम। आज की लाइव स्ट्रीम में विल बी गोइंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू मुल्तान।
in Punjab. We'll be flying an Airbus A320 on an Airblue, call sign will be Airblue 502, and our stream is scheduled to start at 9:30. इस स्ट्रीम में थोड़ा सा डिफरेंट ये होगा कि आज आप लोगों के सामने मैं बेसिकली सारा एयरक्राफ्ट का सेटअप करूँगा. वैसे वैसे मैं यूजुअली कर लेता था पहले, लेकिन आज आई डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ यू. तो we'll be doing the FMC setup, and I'll show you how the Airbus A320 FMC is set up, and बाकी you can ask any questions you have in between. ठीक है. तो इससे पहले I'll be showing you a flight plan कि हमने एक्चुअली जाना कहाँ से है, किस रूट से जाना है. तो इसके लिए हम फ्लाइट प्लान आपके सामने लेके आते हैं. दिस इज सिम ब्रीफ. ठीक है. This is the operational flight plan. So what you guys need to see is call sign Airblue 502, OPIS, Islamabad International Airport, Mike Tango, Multan. Main चीज़ें, our fuel should be 7,151. Alternate is back to Islamabad. Flight time 55 minutes and total fuel time will be 2 hours 36 minutes. Zero fuel weight 61.7, and you can see payload is limited by maximum landing weight, so we'll be cruising. We have a very heavy aircraft today. ठीक है. Cruise level 310 after Martin level 320. इसकी क्या वजह है आपको बताता हूँ थोड़ी देर में. और as I told you, alternate is Islamabad. So here our waypoints will be, our routing is Indec, Juliet 121 Martin, Juliet 142 Malta, Juliet 13 Tiba, and Mike Tango. तो this will basically overhead शेखुपुरा से हम गुजर के पहुंचेंगे to मुल्तान. बाकी ये routing है, details हैं पढ़नी है, wind information, ICAO, flight plan, Sigmet important, weather लाहौर FIR में फ़िलहाल thunderstorm मेन चल रहे हैं. There is isolated thunderstorm observed between 30 north, 35 north, 70 east to 75 east, moving east. And एक और segment भी valid है. वैसे फ़िलहाल ये expire हो गया हुआ है, लेकिन क्योंकि लाहौर में बाहर बारिश हो रही है तो मैं I'll keep this in mind. It's raining at Islamabad right now, according to Active Sky Next. ठीक है. ये क्यों नहीं लोड होगा. अच्छा, ये हमारी रूटिंग है. इस्लामाबाद से निकल के बेसिकली हमारी इंडेक है गुजरावाला के पास, मातिन, शेखुपुरा, लाहौर के साथ से ये लाहौर है, इसके साथ से गुजर के साकुफ टू टॉप ऑफ डिसेंट ओवरहेड साहिवाल, माल्टा, बीबन, दीबा एंड मुल्तान. मुल्तान में विल बी डूइंग एन आइल्स अप्रोच होपफुली इफ एवरीथिंग गोज गुड, एंड दैट इज़ हाउ विल रीच मुल्तान. ठीक है. तो ये है सब कुछ फ़िलहाल हमारी डिटेल्स. इसे हम साइड पे कर देते हैं ताकि हम वापस सिमुलेटर में जाएं. फिर मैं आपको सिमुलेटर में बताता हूँ क्या क्या चल रहा है. अच्छा, ये हमारा FMC है. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त एक्सटर्नल पावर पे हैं. दिस इज़ एन FSLabs A320. एयरब्लू का ही साथ एक ATR आया है, कोई पता नहीं कौन है. एट इस्लामाबाद वी आर स्टैंड 23. ठीक है. सबसे पहले हम डालेंगे फ्यूल. तो फ्यूल एज आई टोल्ड यू, फ्यूल हमारा है जी 7,151 kg, तो ऑल राउंड दैट अप टू 7,200. ठीक है. फ्यूल डल गया. दूसरा पेलोड हमने डिसाइड, मैं आपको बताया था सिम्बीफ के मुताबिक payload is zero, fuel weight is 61.6.7. सॉरी, ये गलत डल गया. 61.7 उधर डलना zero fuel weight में, एंड 33.6. ये अब याद रखेंगे, कहीं लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी. नहीं, फ्रंट पेज पे तो नहीं लिखना, कहीं और बीच में लिख लेते हैं. स्कीप दिस है. माय फ़ोन चार्ज पे लगाना था मैंने. चलो. 61.7 and 33.6. Okay, so what we need to do is, number one, we will go on to the main menu and FMGC. अब ये पुराना है nav data, you can see मैं latest नहीं है, लेकिन it will work for now. सबसे पहले before doing this आप हमेशा चेक कीजिएगा आपके overhead panel में ADIRU अलाइन होना चाहिए. ठीक है. तो ये है बेसिकली ADIRU. इससे बेसिकली जहाज़ के नेविगेशन जो सिस्टम्स होते हैं वो सेट होते हैं. तो मेक श्योर दिस इज़ ऑन nav, nav, nav. ठीक है. लेट्स गो बैक. वंस यू नो दैट दिस इज़ ऑन nav, ये पहले ही कर लिया, कहीं इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसकी ADIRU में करने में. ठीक है. ओके. अच्छा, once you do that, the first thing goes to initial page, you enter in your data. So we'll be flying from Oscar Papa India Sierra to Oscar Papa Mike Tango, which is Multan. ठीक है. ये डाल दिया. Our flight number is Airblue, ABQ is for Airblue.
IKO call sign. Q कितना है ये 502. Alternate is back to Islamabad in case weather खराब होगा at Multan या कोई और मसला होगा, will return back to Islamabad. Cost index will be 30. And that is it. On the second page, make sure you fill out your zero fuel weight value जो हमने पहले ली थी, तो it will be 61.7/33.6. ठीक है, ये number one. Number two, block fuel में entering the fuel, we had 7,200 kg, that is 7.2 tons. That's entered. ठीक है, this is that. Now we'll go on the flight plan page from OPIS. We are expecting 10 right for departure. तो अभी हम फिलहाल इसे set करेंगे. जब फिर clearance लेंगे तो if there's any changes we'll enter in that. We'll do the index 1 echo departure most probably. That will enter in these details. अब इसका थोड़ा different scene है from the Boeing. ये Boeing में there's a separate route page. इसमें सब कुछ flight plan वाले page में होता है. So we'll from index, we go into press the waypoint, go into airways, enter in the details. Juliet 121 till Martin. Then we are going to fly Juliet 142 till Malta. Yes, Malta. Then we're going to fly Juliet 138 till Deepa. Once this is entered, all three, click on insert. Flight plan page में check कर लें. Martin, Sierra Papa, Sakov, Malta, Biban, Deepa. That is good. That looks great. ठीक है. The next thing we need to do is go into progress and we'll enter in our level. So initial level will be 310 and then we'll take 340 later. मैं आपको इसी वजह बताता हूँ. For takeoff in the यहाँ पे basically you have to enter in all the details, the performance calculations. So we'll be using flaps 2 for takeoff. If we were using a flex temperature, we would enter the flex value, but because we're going to be using toga takeoff, any full thrust takeoff because it's a wet runway, so we will be doing this. V1 values आप इसको click करेंगे तो you will get this. V1, V2, VR, and the V2 VR is 142, V2 143. Transition altitude according to charts is 12,000. Airbus में ये अच्छी चीज़ है, ये खुद ही set कर देता है, and everything else. So that is it. Your FMC is set up. बाकी you can check the radio nav for any ILS frequencies once you're landing. Fuel prediction is important. So at Multan, it is 50-minute flight according to the Airbus, and we should have 4.7 tons. Alternate time to back is 40 minutes. Final reserve time 30 minutes. Extra time is another 50 minutes. तो काफ़ी fuel है for the flight. उसके अलावा अब ये IR और ADIRU जो मैं कहना चाहे, we align in 3 minutes. बाकी what we're going to do till then, we will get our clearance. But for clearance, we first need to file a flight plan. ठीक है. So let's file a flight plan. We're gonna flying from Islamabad to Multan. Alternate is also Islamabad. Departure time should be 1645 Zulu. Flight time is 0 hours 55 minutes. Total fuel time is 2 hours and 36 minutes. Cruising speed 450 km/h. Initial level 310. Routing is Indec, Juliet 121 Martin, Juliet 142 Malta, Juliet 138 to Deepa. Yes, Deepa. And let's file a flight plan. That is filed. ATS की details लेते हैं. Let's see if the voice status is working. 1262. Thank you, Nabil. Thank you so much. This is OPIS Information Hotel. Information Hotel. 155, expect ILS approach with runway 28 left at you. Transition level 55. Wind 090 degrees 16 knots. Visibility 5 kilometers, moderate thunderstorm with rain. Few clouds at CB 3000 feet, scattered 4000 feet, overcast 10000 feet. Temperature heat 2.20 QNH 1005 temporary. Wind 090 degrees 20 knots, west 35 knots. Visibility 2000 meters, moderate thunderstorm with rain. Few clouds at CB 3000 feet. Advise on initial contact at Information Hotel. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके मुताबिक Information Hotel. बात सुन लो
यार मैं गलत हूँ 1555 expect ILS approach runway 28 left at you. Transition level 55. Wind 090 degrees 16. अच्छा Visibility 5. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है बॉयज एंड गर्ल्स कि द विंड इज 090 degrees 16 knots and it is कहते हैं 28 left in use, which I do not understand why. लेकिन let's get our clearance में शायद कुछ चीज़ें clear हो जाएंगी कि this is if the wind is वाकई 090 at 16 so we should be using 10 right, but okay to 130.6. Let's get our clearance. Islamabad ground, Assalamu alaikum, Airblue 502. Frequency नहीं change हुई. चलिए ऐसे क्या मसला हुआ है. आप ये देख सकते हैं कि वी पायलट ने फ्रीक्वेंसी चेंज रजिस्टर कर रहा फॉर सम रीज़न. VHF2 एक्टिव भी नहीं हो सकता. अच्छा अब ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा. यहाँ से कर लेते हैं. चलो कॉम 1 130.6. क्या था. हाँ इस्लामाबाद ग्राउंड अस्सलाम वालेकुम Airblue 502. Airblue 502 Islamabad ground, go ahead sir. Airblue 502 stand 23 type A320. We have 153 souls on board. Level 310. Information hotel. Request clearance to Multan as well. Airblue 502 stand by for customer 1. 502. 2 ready to copy. Go ahead Airblue 502. Airblue 502 clear to destination Multan as well. Index to Delta departure. Runway 28 left. Initial climb flight level 80. Set squawk 4527. Clear to Multan, index to Delta departure, 28 left, initial 8,000 feet, squawk 4527, Airblue 502. Airblue 502, read back correct information, hotel is current, call for push and start, QNH 1005. 1005 and request the latest surface winds at Islamabad, Airblue 502. Airblue 502, surface winds is 10012 knots. Roger, in that case, we would like to request 10 right for departure, Airblue 502. Airblue 502, copy, I'll just send your request to tower. Standing by, Airblue 502. So, I don't know what the ATC controllers are doing, but it should have been 10 right. उसने फिर भी मुझे clearance to it left की दी है. I don't know why. Pakistan 681 also requesting reclearance via That's 10 right. Interesting, but खैर. Pakistan 681, stand by for clearance number 2. अच्छा. All systems stand by. Baki, the other issue that the ATC did is transition altitude is 12,000. I was given level 80, it should have been altitude 8,000, but kya kar sakte hain. Squawk is, let's enter in the squawk 4527. Squawk se yaad aaya if you guys are interested, I just saw a movie today. Its name is 7500. If you know 7500 is a squawk for hijack. तो उसकी movie आई on Amazon Prime. Very nice movie. I enjoyed it a lot. Very realistic on the Airbus A320, A319. Hi, attention, Turkish 121 ready to copy clearance. That is a good movie if you want to watch it. ठीक है. Okay, 1005 is our QNH for today. Let's see again. अभी भी नहीं चल रहा. चल रहा अब तो चल रहा. नहीं, फिर बंद हो गया. मुझे कॉल आ रही थी और मैंने frequency change कर दी. Go ahead, Airblue 502. Airblue 502, you're clear to destination Multan as well. Index to Charlie departure, runway 28 left, initial climb flight level 80, and squawk 4527. Just to confirm, index to Charlie out of 28 left, Airblue 502. Airblue 502, my bad, it's runway 10 right, index to Charlie departure. Roger, we're clear to Multan, index to Charlie, 10 right, climb 8,000, squawk 4527, Airblue 502. Airblue 502, call for push and start, breathe back is correct. Welcome, Airblue 502. Acha ji. That is that. Islamabad ground, assalamu alaikum. Carglass 4 Mac Charlie, requested you check. Index to Charlie set करना है. Carglass 4 Mac Charlie, video 505.
what we'll do And after Cargolux that 4 Mike Charlie is request clearance to Multan flight level 350 with the latest information on board. Cargolux 4 Mike Charlie, stand by for clearance number 2. discontinuity hataएं. Last transmission, who was for number 2? Pakistan 681. अच्छा, let's what we're Pakistan going to do 68861, ready to copy new clearance. what we're going to do is we will Pakistan 681, clear to destination Multan as well, index to Charlie departure, runway 10 जल्दी से right, charts review initial करें climb flight level 80 कि हमने जाना and कैसे है. squawk 4553. अच्छा, index to Clear the Multan index to Charlie 10 right, initially climb flight level 80, squawk 4553, Pakistan 681. Pakistan 681, read back call for pushing start information, hotel is current QNH 1205. index to Charlie departure. Index right turn eastop Samex index Admec and index. ठीक है, this is our routing. Minimum climb gradient of 4%, we have that, all good. Index to Charlie to India Sierra 407, right direct is stop, Samex, left Admac, index, climb by ATC. Transition altitude 12,000, as I told you. Let's just check this कि FMC में यही सब कुछ है. Is India Sierra 407 is stop, Samex, Admac, and index, all good. The second thing I want to show you is, wait, किधर गया. अच्छा, let's go down. We are at stand 23, which is here. Pushback will most probably facing south. We'll do Mike, Tango, Kilo, and Alpha to holding point 10, right? That is our routing expected. That looks good. अब हम क्या करेंगे कि let's turn the APU on and get ready. So APU goes on. 1, 2, 3. APU start goes on. Let's remove the jetty. Prepare for push and departure. The jetty will come off. Cargolux 4 Mike Charlie, ready to copy clearance? Ready to copy 4 Mike Charlie. Cargolux 4 Mike Stays are Charlie, off. you clear to destination Multan as well, index to Charlie departure, runway 10 right, initial climb, flight Second thing, level once 80, APU is on, and set your squawk to 4543. Clear to Multan asphalt index to Charlie departure out of runway 10 right, climb maintain 8000, squawk 4543, Cargolux 4 Mike Charlie. APU on ho jao, APU on ho jao. Read back correct. We'll go 4 Mike Charlie. Okay, APU on hoga तो फिर we'll remove ground power and then get our pushing clearance. अच्छा जी, APU is on. Pushback 1 minute दो, pushback मांगते हैं. APU available. Now we turn the ground unit off from here. External power off. Second thing we need to do is turn APU bleed on, engine 1 bleed on, packs on. We need to remove the ground equipment. Let's do that from here. Units, not units. Pakistan 556 requesting controls. push and start. Disconnect. Pakistan 556, pushing Sierra approved face south. Disconnect. Facing south, Pakistan 556. Airblue 502, stand 23, information hotel, request push and start. Turn beacon on. And fuel pumps, chalo. Call नहीं गई. Ground Airblue 502, stand 23, information hotel, request push and start. Airblue 502, pushing start approved face south. Push and start approved, face south, Airblue 502. Okay जी, push and start approved, facing south. Prepare for pushback and departure, nose goes right, pumps go on, And Cargolux 4 Mike Charlie request push and beacon is start gate 2. on, brakes go off. Commencing push. All engines clear. Cargolux 4 Mike Charlie, pushing start approved face south. Facing south push and start approved to Cargolux 4 Mike Charlie. Okay, let's start one engine. Let's go ignition start, right engine start. The seatbelt signs need to go on. It's a wet airport, as you will expect at this बारिश season. एक PI के A320 Turkish का मुझे 737 लग रहा है और
ये भी एक जहाज, दो खवे हैं, एयरब्लू का एक और खवा है, एक ही And छोटा Airblue कोई खवा है। 1447 is ready for push and start. ये KTR खवा है, नाइस है, we have nice traffic, API के 320 खवा है, very nice Airblue traffic. 1447, confirm what's that? We have a starting Yes, up we're engine. ready for push and start. Airblue 1447, stand by. Your traffic Carglass 4 Mike Charlie is pushing back. Roger, standing by Airblue 1447. फुल ना ये इनने सिमुलेशन इफेक्ट में फुल स्टैंडिंग वाटर किया, अब इतना होता नहीं है पानी इस्लामाबाद में, transmission but Pakistan, 3 to 4. okay, the right engine has started. Let's start the left engine, engine number 1. Set parking brakes. Quick set. Waiting your confirmation. We have a for good engine start, all good. We can remove the details. Let's show. So engines have started successfully. They are starting still. Carglass 4 Mike Charlie confirms squawk 4543. Available, good. Okay. My bad, 4543, squawk for my Charlie. Mission normal mode. From APU we done APU bleed off. Tow truck disconnected. APU master Bypass off. Pakistan Fuel turn flaps 1324, radio check. Speed Vix armed. Pakistan Let's put this up. 1324, Islamabad 325 FI. लाइटें थोड़ी तेज कर देते हैं. Thank you, Pakistan 1324. बाकी क्या क्या रह गया है? नहीं, सब कुछ भी नहीं रह गया फिलहाल. अच्छा नहीं. Flaps 2, ground spoilers armed. यहाँ की लाइट ना थोड़ी चला लें, अंधेरा नहीं हो गया तो. Left is clear. Right is clear. Good. Okay, we should request taxi, लेकिन we have an aircraft in front, तो मिलनी तो नहीं है. Pakistan 681, stand by. Ground AB502, ready for taxi in sequence. Airblue 502, taxi Papa Tango, Quebec, Kilo Alpha, hold short runway 10 left, QNH 1005. Roger, Papa, Quebec, Tango, and Kilo Alpha, hold short 10 left. Back AB502. Papa, Quebec, Tango कैसे हो सकता है? It should be either Pakistan Quebec 681 or after the traffic A320 या Airblue तो यहाँ से लेके 502, जाए. passes to Papa, push and start approved. अच्छा, उनको पूछ लेते हैं. Airblue passes. Always confirm if you're confused, ठीक है? Ground AW502, just to confirm, Papa, Tango, Quebec, Charlie, Kilo Alpha. 2, just clearance. Last transmission were block seconds, sir. AW502, just to confirm, we take Papa, Tango, Quebec, Charlie, Kilo Alpha. Ethan, sir, there's a traffic in front of you, so that will be a shortcut for you. Papa, Tango, Quebec, and Kilo Alpha. Copied AW502. ठीक है. Quebec, Charlie ही है basically, ठीक है? Pakistan Let's go. 1324, requesting clearance to the Multan Airport. Takes off. Taxi light is on. Pakistan 1324, you're cleared to destination Multan Asphalt. Index to Charlie departure, runway 10 right, initial climb flight level 80, and set squawk to 4552. Clear to the Multan Airport via the IDENC 1 Charlie departure. Initial climb to 8000 feet, squawk 4552. Pakistan 556 requesting a taxi to 211. Right. All station 1 by 1, sir. Yeah, go ahead, sir. Carglass 4 Mike Charlie request taxi to 10 right. Carglass 4 Mike Charlie taxi Mike Tango Kilo Alpha, hold short runway 10 left. Mike Tango Kilo Alpha to 10 left for Carglass 4 Mike Charlie.
Pakistan 556 requesting taxi to runway 28 left. Pakistan 556, taxi Mike Tango. Let's do a short departure briefing in between. Left. We'll be taking off 10 right, full length as usual. We will do a flaps 2 departure. We'll be taking off using Toga. In case of an engine failure below 100, small failure, any failure, we'll reject takeoff. Above 100 knots, only serious issues like an engine fire or any other blown door or anything. In the case we pass V1, we have to take off, no problem, no matter what happens. Apart from that, in case of engine failure, we'll go straight ahead, we'll climb till at least 6,000, make a left turn, make a left hand downwind and come back to land. In the other case, V rotate is 143. Hydroplaning might be an issue in case we do a rejected takeoff, but it shouldn't be that much. Apart from that, everything looks good. At 55 minutes for departure, we'll turn the weather radar on in a minute because I need to see how bad the weather is. So let's turn that on. Acha. Runway 10 right, squawk 4521 using the index to Charlie departure. Climb and maintain 8,000. Pakistan 556. So this looks clear, वैसे, but we'll see Pakistan 556, read later that correct how call much for clear taxi. it is. Cabin's ready, which is good. Pakistan 1324, ready for push and start. Pakistan 1324, stand by. Pakistan 1324, push and start approved, face south. In the meanwhile, TCAS goes to all DA and cabin is ready, good. Calculus 4 Mark Charlie, hold One. position. Second thing we need to do is do a takeoff config check. Holding position 4 Mike Charlie. This is takeoff config, we check this. Pakistan 556 It requesting should be taxi. good. Takeoff Pakistan config normal. So 556, takeoff, stand by for what? auto brake max check, signs on, spoiler is on, flaps takeoff, takeoff config normal, cabin is ready. That's all good. Evelyn 222, radio 5. Apart from that, looks all good. We'll taxi straight ahead. We are on kilo right now. Let me show you. We are on kilo and we'll go till the end. Make यहाँ से takeoff करेंगे. That's our plan. As you can see, for some reason, the SimArc people who have created this scenery have simulated in case of any rain, we will Confirm, we're just getting the... in case we have any rain, what will happen is there will be standing water, which shouldn't be that, but hey, that is their choice. Picture you can see Murat Hills. These are the Murat Hills. That is good. Charlie, Boeing 737-800 passes from your left to right, your push and start is approved. Give way to Kakalux 4 Mike Charlie from our left, passing to the right, push and start approved, Kakalux 1324. Next frequency 12215. For Papa? 85681. Pakistan 681 taxi Papa Tango Quebec Kilo Alpha Hotel runway 10 left, QNH 1005. Pakistan 681 QNH 1005. Pakistan 681, confirm you got your taxi instructions? No sir, just we didn't call you for taxi yet, we're not ready. Pakistan 681, roger. Okay, looks all good for now. Viper कुछ ज़्यादा तेज नहीं है. Let's do it to intermittent. Pakistan 556, confirm you call for your taxi, sir? मुझे intermittent नहीं है. So we are reaching kilo. Not yet, Pakistan 56. Pakistan 556, roger. Airblue 522, now contact Islamabad Tower on frequency 122.150, bye-bye. और Islamabad Tower 12215 के dating at 502. पता नहीं change हुआ है नहीं. It's पहले taxi. Change नहीं हुआ. पता नहीं आज V-Pilot क्या हुआ. I may need to update it. 12215. Islamabad Tower, good evening. Airblue 502, holding short 10 left at Alpha. But Airblue 502, Islamabad Tower, hello, cross 10 left behind, departing Turkish 737 bound from 10 right behind. Roger, cross 10 left behind the departing Turkish 737, line up 10 right behind Airblue 502.
वो जा रहा है, तो behind that we are looking at lineup, landing lights on, strobe lights on. This is 10 left, which is currently closed क्योंकि उस side पे runway के ज़मीन बैठ गई हुई है which is very funny indeed. कि नए एयरपोर्ट पे कैसे ज़मीन बैठ जाती है यार, कैसा एयरपोर्ट बनाया. But खैर after that we will depart 10 right. Nabil bhai, it should be night time, but a lot of people complain about night time, so this is sunset that's going on. Acha. Let's line up. Are we on the center line? Yes, we are. Good. Stop the aircraft. Parking brakes on. Let's wait for the clearance. Runway 10 right. I believe the longest runway in Pakistan, the widest runway in Pakistan, or 28 left. It is about 60-meter wide runway. Pakistan mein khayal se there is no other runway which is 60 meters wide. Baki looks good. We are all done with our preparation. We'll just wait for clearance, and then we'll depart. Airblue 530, reference 1001, 2 knots, clear for takeoff 10 right. Roger, 10 right, clear for takeoff, Airblue 502. Okay. Nose to takeoff, and clock run. Brakes off, let's go. Okay, G man, Toga, SRS and runway, checked, blue. First set. Knots, checked. V1, okay. We go. Pausing way to climb, get up. There we go, out of Islamabad. 502, contact Islamabad approach 12165 at office. 12165 will office AP-502. Okay, autopilot goes on. Islamabad approach. Islamabad approach, Assalamualaikum, AP-502, passing 3500, index to Charlie departure. Climb thrust. Airblue 502, radar contact. Proceed direct index and climb flight level 180. Direct to index, climb flight level 180, Airblue 502. Direct to index, direct, index, beam points, insert, climb flight level, कितना का था? 140? Let's check. Just to confirm, climb level 140, Airblue 502. Flaps 1. Airblue 502, negative, flight level 180. Level 180, Airblue 502, thank you. I should have noted that. Okay, G, flaps 1, and once we cross this marker, flaps up. Okay. Speed brakes disarmed. Nose lights can go off. Okay, all good. We'll climb at 250 knots as usual. Turn the wiper off as well. And this is our aircraft. Beautiful aircraft, beautiful livery.
जो लोग उसका कह रहे हैं for membership isn't available in Pakistan. If you want to purchase it, you can purchase using a VPN. But वैसे the membership isn't available on Pakistani internet. But you can use a VPN and purchase it if you want to. Obviously, that gives you a priority over all the other viewers. As you can see, Nabil Bhai is a subscriber. He's a membership. He has the membership. That's why he has a blue tick and he has the membership logo next to it, next to his name. So if you want to purchase it, it's very cheap, not expensive at all. Use a VPN and log in. You'll get the option on my channel under memberships, and from there you can purchase it. We have a bumpy ride because of the weather, but have not an issue. We'll be reaching our cruising level soon, level 310. We do not have any en route control, so after Islamabad approach, we'll be on the Unicom. Let's see the traffic. We have 6 departures, mashallah se. Izan, Asif, Saad, Fahad, Nicholas, Shah, Tariq Iqbal, Tariq Bhai, Afnan, Mazhar, and Muhammad Usman. Usman is also there. Serene is already going, and we have one inbound. So that's that. Baki, the Pakistan airspace is empty, and that's that. तो खैर let's increase the range a bit. Let's see आगे क्या सूरत हाल है weather की. Let's turn the lights on also a bit more. Okay, weather looks clear. आगे इस cloud के बाद should be clear. Passing 10,000 feet, landing lights go off, and So, any questions till now about the Airbus A320? I've tried my best to include as many things as I can. Like, if you still have any questions, you can ask me side by side about the 320, especially, or how the 320 flies. It's a beautiful aircraft, vessel. Let's also reset to standard now. We could have done this earlier also, but our choice. We're gonna climb level 180 initially, and then we will move on further. Nice clouds, as you can see. Airblue 320, the registration, if you're wondering, it's Alpha Papa Bravo November Uniform, BNU. You should make a Discord. I will think about it for sure, Nabil Bhai. Why not? Yes, Tariq Bhai is here. It's nice weather. Multan looks clear. Tariq Bhai is also on the stream. Thank you for joining. Apart from that, वैसे I was thinking, when I was deciding which route to fly, I was initially deciding to do Karachi to FSLabad, but then I thought Karachi is already done, so let's do 4,800 feet. so let's do then Islamabad to Multan. So Multan has a very good scenery. Please talk with Charlie. Multan has a very good scenery from Simark as well. जिन्हें इस्लामाबाद बनाई उन्हें मुल्तान भी बनाई हुई है. So it's a very nice scenery. तो मैंने कहा why not show you that. Okay. Flap setting for takeoff, I use flaps 2 for takeoff. Otherwise, you can also use flaps 1 in क्योंकि it's very hot. The weather was very bumpy, and we're expecting long takeoff length. So I use flaps 2. Usually in Pakistan, flaps 2 is used. In Europe, when I fly in Europe at least, where the weather is very good, we have high density, low temperatures. So I fly using flaps 1. Okay, APU क्या काम करता है? APU gives the electrical powers on ground. That is the function of the APU. Max cruise कितने feet पे करोगे? Cruising will be at level 310 till Martin and level 320 after Martin. उसकी वजह ये है, मैंने आपको बतानी थी, आप मुझे याद नहीं दिलाते आप लोग, कि आप यहाँ देख सकते हैं कि initially our heading is towards the east. So eastwards flight always has an odd flight level. So we'll do it till Martin. After Martin, once we'll come towards the west again, it's side P, you can see it's turn. Then we'll climb to level 320 because it's even to the west. So that is why we'll have a change of cruise level in between. Apart from that, okay. What is Victor Mike Charlie? Victor Mike Charlie means that you should be Airblue 502, no further ATC available. Might inform 12.80. Have a safe flight. Allah Hafiz. 1228. Thank you. Allah Hafiz. 502. Let's cruise till 310. Then I'll answer your questions. Achha.
Okay, what else? Victor Mike Charlie means you are visual with the ground. आपको ज़मीन नज़र आ रही है. I have seen stars which appoint a maximum speed of example 230 knots at the star, but aircrafts are higher than that speed at that point. Any reason? The reason for that usually is number one, ATC can give you high speed descent. Number one. Number two ये है कि usually जो flight radar वगैरह पे जो speeds आती हैं those are ground speeds. So if an indicated speed is even 230, a ground speed will be 250, 260, 270 depending on the wind that is actually at that point. तो इसलिए you might see a difference ऑफ दैट, वरना FMC में खुद ही प्रोग्राम होता है जब स्पीड रिस्ट्रिक्शन एक लगी हुई है स्टार पे तो इट इज़ आल्सो प्रोग्राम्ड इन द FMC इटसेल्फ. स्ट्रोब क्या है? जो साइड पे लाइटें जल रही हैं जहाज़ की एजेस पे, ये स्ट्रोब लाइट्स कहलाती हैं. सवीन का 330 कब ऑपरेशन स्टार्ट करेगा? नहीं, आई हैव नो आइडिया, सॉरी. तो ये गेम कहाँ से मिलेगी? P3D की वेबसाइट है, लिंक नाम गेम सिमुलेटर का नाम डिस्क्रिप्शन में है. यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. My aircraft on your stream Thai 2121. आप मुझसे पहले ही टेक ऑफ कर रहे थे तो it will come. आप आ गए थे, don't worry. 4 Mike Charlie is also here, very nice. Pakistan Aviation News अगस्त कब आएगी? हमने यूनिकॉम पे जाना था. Sure, मुझे ना show. 122 Pakistan 1234. I believe I also need to update the pilot. यूनिकॉम 1 के लिए करना पड़ेगा सब कुछ. Okay. वैसे यार तक ये होता तो नहीं, कल तक तो नहीं हो रहा था, आज क्या हुआ वैसे? Testing form 2 is working. VHF 1 पे मसला कर रहा है. VHF 1 तंग कर रहा है, नहीं कर रहा? ये छोटा होना साइड पे वो. अब चल रहा है. नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा खैर, अच्छा तो अगस्त वाली वीडियो इज़न्ट कमिंग बिकॉज बेसिकली हुआ ये कि मैं कुछ बिजी था पिछले हफ्ते, काफ़ी ज़्यादा कुछ काम कर रहे थे, कुछ और भी काम कर रहा था, इसलिए मैं बिज़ी था. अब हुआ ये कि मैंने कल बैठ के, सैटरडे को वीडियो रिलीज़ होती है, मैंने फ्राइडे की दोपहर को बैठ के वीडियो बनाई और मैंने कहा कि रात तक एडिट करके मैं कल लूँगा अपलोड. मैंने कहा ये वीडियो नहीं होनी चाहिए खाली. हुआ ये कि मैंने जब वीडियो बना ली और रात को मैं 9 बजे एडिट करने बैठा, मैंने कहा घंटे 2 घंटे में कर लूँगा कि सुबह 9 बजे रिलीज़ होती है. तो मैं जब एडिट करने बैठा तो पता लगा कि लाइट ही गई. उस वीडियो में लाइटिंग बहुत ख़राब थी क्योंकि मैंने नया सेटअप किया है, तो मैं अभी टेस्टिंग कर रहा था, तो उस वीडियो में बहुत गंदी लाइटिंग आई थी और एंगल भी नहीं सही बना हुआ था, तो इसलिए वो वीडियो नहीं आई. सॉरी फॉर दैट. इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को आ जाएगी. इससे मैंने इस जगह मैंने लाइव स्ट्रीम कर लिया कि चलो लेट्स डू लाइव स्ट्रीम. दैट इज़ वाई वीडियो नहीं आई कल, इंशाल्लाह आ जाएगी. APU bleed is APU bleed क्या होता है? APU bleed basically एक सीक्रेट साइंस ऑफ करनी थी. APU bleed is a function of an aircraft जिसके थ्रू इंजन्स को नंबर 1 स्टार्टिंग पावर मिलती है और ब्लीड एयर फ्रॉम द इंजन्स कहते हैं बेसिकली. और कल मुझे पता लगा, कल तो मैं रिसर्च भी की थी उस्मान के साथ बैठ के, तो मैं कल पता लगा कि जी एयर कंडीशनिंग की जो हवा होती है ना, AC की जो हवा होती है जहाज़ में होती है, वो भी बेसिकली APU bleed ही प्रोवाइड करता है. दैट इज़ APU bleed. वी पायलट में कोई कमांड है जिससे रेडियो सेट किया जा सके डायरेक्ट? .com1 आगे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, उससे मैं भी अभी यही कर रहा हूँ. नबील भाई पूछ रहे हैं कि थर्स्ट मास्टर एयरबस वर्जन थ्रॉटल सेट इज कमिंग ऑन 24th, क्या सीन्स है? या टू बी वेरी ऑनेस्ट आई विल नॉट, क्योंकि आई हैव अ गुड सिस्टम रनिंग और आई एम नॉट हैप्पी विद इट. मतलब मैं थक गया हूँ उससे. साइटेक का है मेरे पास पुराना सिस्टम, लेकिन आई एम नॉट इन्वेस्टिंग मोर इन फ्लाइट सिमुलेशन क्योंकि ऑब्वियसली आई वांट टू सेव अप फॉर द व्हील फ्लाइंग. बट so most I loved it. मुझे बहुत प्यारा लगा था जब मैंने देखा था, लेकिन I won't be investing in it. दूसरा जी क्या क्या है भाई? आसान लफ्ज़ों में ट्रिम व्हील का बता दें. ट्रिम व्हील बेसिकली आपके योक या आपके साइड स्टिक की जो फोर्सेस होती हैं उसको न्यूट्रल कर देता है. वो बेसिकली जो आप एक जॉयस्टिक को खींचते रहते हैं या एक एल्टीट्यूड मेंटेन करने के लिए उसको कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स ज़ीरो हो जाती है, उसको ट्रिम व्हील कहते हैं. और मैं किस तरीके से जा नहीं सकता इसको, सॉरी. अच्छा
Can a pilot get a shortcut by ATC if there's no traffic instead of following a long star? Yes, and they do very commonly. What is yaw damper? Yaw damper is a function that basically reduces the yaw of an aircraft. Yaw is the क्या कौन सी motion कहते हैं? It is the lateral. I believe it's called lateral. या horizontal या vertical. Vertical तो नहीं होता, horizontal aileron का काम होता है. Lateral is the nose. The nose की direction को ऐसे ना, nose अगर आप left right करें तो nose also goes to the left और nose goes to the right. तो उसको damp करने के लिए, उसकी effectivity को कम करने के लिए we use a yaw damper, which is on the 737s. And मैंने बाकी किसी चार्ज में देखा नहीं है as in such. इसमें भी होगा लेकिन इसमें कोई specific function नहीं है yaw damper का. अच्छा जी. What is the meaning of maintain technical or proceed technical? First time I'm hearing it. I have not heard it before, but sorry. I have not heard what is maintain technical or proceed technical. Airblue के plans लिखा है, planes होना चाहिए. ज़्यादा अच्छे हैं या सवीना के? सवीन के यार दोनों के अच्छे हैं. I like both. अच्छे हैं वो. I went from yoke to joystick. I prefer joystick a lot. So what I have a yoke, I have a throttle coordinate of the SciTech, and I also have a Thrustmaster T-Flight Hotus X. So I started with an Xbox controller, an Xbox 360 controller. Then I bought this joystick. Let me see. This is the joystick which I'm flying right now, and it also has a throttle coordinate, which was good. Then I bought the SciTech. So what I do is, okay, the yoke is for flying, upwing, and I use the joystick for the rudder. As a tiller, you can believe. Tiller cannon. And for Airbus, I fly solely using the joystick and the throttle coordinate, but for Boeing, and I use this yoke and throttle coordinate and that as a tiller. And for the Airbus, I also use the joystick as a tiller. So that's what I do. It's a good setup. I like it. But I want the rudder pedals. It's too expensive. And unfortunately they're not available in Pakistan, तो मुझे बाहर से लाने पड़ेंगे या किसी से मंगवाने पड़ेंगे, लेकिन वो पैसे खर्च करने के मैं बिल्कुल दिल नहीं कर रहा फिलहाल. But खैर, that's that. अच्छा भाई, pan क्या होता है? Pan is basically declaring not an emergency, but declaring that something is wrong, something is happening, and we might need further help. तो एक होती है mayday, that is emergency, you need to land immediately, you need to do something. बहुत मसला है. Pan is something is wrong, something has an issue, लेकिन इतना serious issue नहीं, number one, and number two, there is no urgent assistance required. That is that. Okay, सर जी कैप्टन कितने का होगा? एयरप्लेन स्टीयरिंग के साथ कितने का है? Yeah, it costs around, ये yoke system है, this costs around 40,000. बाहर से मंगवाना पड़ेगा. तो this simulator is $99. जहाज आगे, whatever you buy, the additional, your choice. Hello Captain, hello Hamza, hi Tisham. अफनान कहता है सकर्दू से भी फ्लाइट करें. सकर्दू मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि सकर्दू की प्रॉपर सीनरी नहीं है. That's why I didn't do सकर्दू. But इंशाल्लाह FS 2020 जब बिल्कुल कॉमन हो जाएगा फिर तो कर लेंगे सकर्दू. जो लोग FS 2020 का पूछ रहे हैं कि आप उस पर क्यों नहीं कर रहे, तो I showed it to you last time. Last live stream में हमने FS 2020 ही किया था, लेकिन the thing is I'm not using it regularly. I told you in that stream why. So if you want to know, you can watch that stream to get my views about it. But I'm not flying that regularly. I'm flying this P3D. अच्छा, what we will do is, इतना प्यारा व्यू है, मेरा चेंज करने का दिल नहीं कर रहा. मुझे कॉकपिट में देखना है क्या चल रहा है, लेकिन इतना प्यारा व्यू है कि यार क्या बंदा है. वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल. खुद ही चेंज होगा ना फिर हमको. चलो अब हम जाते हैं कॉकपिट में. क्या चल रहा है जी? अच्छा, we are approaching Multan, as you can see. We are still in the climb, so we'll climb level 320 खुद ही. So let's change this to 320. In the meanwhile, we will get the weather for Multan. So let's see if there's any ATC online. There's no ATC at Multan. We will use Active Sky next. Active Sky अब कहते हैं इसको, OPMT. Okay जी, weather observation time 1700 Zulu, wind 180 degrees, 04 knots, visibility 4 kilometers, smoke, no significant clouds, temperature 32, dew point 27, QNH 1001. Okay, the interesting thing is it's tailwind of 4 knots. I will still be landing on 36 because it's a primary runway, it has an ILS. But what I want to show you guys is
we will do a flaps 3 landing today. तो you might remember flaps 3 from a very famous Indian pilot जो आज famous हुआ है, किसी को नाम पता है मुझे बताइएगा, आप लोगों को तो पता ही होगा सबको. But we will be doing a flaps 3 landing. I'll tell you what are the differences, number one, and how to do it in an Airbus. ठीक है. So, in the meantime, what we're going to do is we will set our arrival to OPMT arrival, ILS 36 Zulu procedure, DBA 1 Bravo star, insert. We'll check the flight plan. Malta, B1, limit DBA, Mike Tango 411, OS Kevin आना चाहिए, Kevin के बाद ILS. ठीक है. Okay, so flying beast, very good, very good. अच्छा, once we do that, we set the arrival star. मैं आपको star chart से भी दिखाता हूँ. Second thing we do, go to performance, next phase, and we need to enter in the details for approach phase. ठीक है. So for this, let's open the charts first. Let's discuss the charts. Then we will see further. So it's a DBA 1 Bravo arrival. So it's DBA, Mike Tango 411, as I showed you, max 230 knots. Oswald की पुराना है, Kevin है, ये वैसे पुराना ही है ना, हाँ, ये नया वाला चार्ट है, Kevin और ये runway है, ठीक है. Multan has a single runway only, ILS 36, so we will do that. Let me show you the airport. You can see this is the ILS 36. This is what we'll be landing on. This is the apron. मुल्तान में गया था in one flight. I showed you, मैंने blog भी बनाया है, it's on my channel, cross country navigation to Multan on Cessna 152. You can see that. अच्छा, the ILS procedures, Kevin, runway course 002, ILS frequency 110.3. Our minimums are 630. It's a Cat 1 landing. So, ठीक है, all good. We'll do a short approach briefing right now. So, okay, localize the frequency 110.3, approach for 002, glide stop check at 1677 at 4 DME. Minimum 630. In case of a misapproach, we climb straight ahead, passing 1500, turn right at Mike Tango 431 like this. And climbing 2000, contact ATC. MSA is 2100, which is good. We are fine with that. 3000 at Kevin, and then descended 2300 to intercept the ILS. All good. अब चीज़ें हमने चेक करनी है कि अच्छा, Kevin is 3000, should be here 3000 and 210 good, Mike Tango 41330 good. अच्छा, इसमें जो है ना, Airbus में different चीज़ें from Boeing, जो Boeing की आती है, इसमें you need to enter in the details over here also, ठीक है. तो we checked our details and we'll check them again. The QNH is 1001 hectopascals. The temperature is 32 degrees centigrade. The wind is 180 degrees at 4 knots. Decision height is 227 or MD is 630. The decision height is in radio, MD is in MSL. The landing config, we'll do flaps 3 landing. Okay. So our V approach will be 145, V landing will be 140. So once you've selected it from here, आपने जाना है ओवरहेड पैनल में और आपने यहाँ से भी इसे फ्लैप्स लैंडिंग फ्लैप्स 3 कर देना. ठीक है, मेरा जहाज़ फाइनल्स पे चीखता रहेगा कि फ्लैप्स 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 फ्लैप्स. ठीक है, ओके. अच्छा, क्या क्वेश्चंस हैं? Can you proceed direct on your own when there's no ADC? Yes, you can. Why not? You're in uncontrolled airspace. Give me 1 minute. अच्छा, proceed technical I heard on Karachi FIR. Proceed technical नहीं होगी, should be proceed direct. किसी waypoint पे direct जाना हो तो you say proceed direct to. So क्या VATSIM MS 2020 पे work कर रहा है? हाँ, I heard कि work कर रहा है, लेकिन I haven't tried it myself. अच्छा, you have to apply for pilot jobs. There is work and recommendations. Yeah, it works in recommendations. You can apply, like, further process is done within recommendations. To be very honest, Nabil bhai, at least in Pakistan. What is VAPP? It's your approach speed.
V आप जहाँ भी देखेंगे इन एविएशन, V refers to speed, V1, V2, VR, VM, VS0, VS1, VMCG, जो भी V है ना, it refers to approach speeds. तो VAPP uses approach, ठीक है. Flaps 3 क्यों कर रहे हैं वैसे? It depends. Flaps 3, basically what happens is you can fly at a higher speed of landing, and that saves you a bit of fuel in the case you're coming on idle thrust. That is the only reason I would like to do. I'm doing a flaps 3. वैसे I don't think पाकिस्तान में flaps 3 होते हैं. I'm not sure if any carrier allows it, Airblue या PIA. लेकिन I'll do a flaps 3. अच्छा, P3D game का name है prepared. It's in the description name. PUBG banned in India. I don't really care. है. So we'll be starting our descent soon. And Airbus में ये जो sign है ना, this is top of descent sign. So it's in like 50 nautical miles. We'll start our descent and land in Multan. I'm not expecting any ATC at Multan for now, but let's see. शायद आ भी जाए थोड़ी देर में, क्योंकि अभी लोग इस्लामाबाद से फ्री हो रहे हैं बाकी controllers. You can see the aircraft. Turkish is ahead of us. Airblue मैं हूँ. Calculus is behind. 681 पीछे है. Dash 8 के साथ. 556. Berlin 222. And Pakistan 651, also 320. एक और भी है फहद हसन, I think JVU, I think is JetBlue, not sure. But खैर, interesting. A lot of pilots, very nice. The flight is about 55 minutes in airtime, Nabil bhai. So from block to block, I'd say 1 hour 15, 1 hour 20. वो भी ज़्यादा है. अच्छा, गला सूख गया. Please share this airport info in description. There, it is in the description already, I believe. How long is the flight? The flight is मैं बता दिया. Guess who's flying the dash 8 with extended gear? शाबाश उस्मान. आपसे एक साइड कर सकता हूँ. अच्छा, so जब भाई टेक ऑफ करने के बाद पॉजिटिव क्लाइम क्यों बोलते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बेसिकली पॉजिटिव क्लाइम आप इसलिए बोलते हैं कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि जहाज़ वाकई क्लाइम कर रहा है, और फिर पॉजिटिव क्लाइम के बाद आपने ये भी देखा होगा कि पॉजिटिव क्लाइम के बाद साथ ही पायलट फ्लाइंग होता है वो कहता है गेयर अप. यानी जब आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ जी जहाज क्लाइंब कर रहा है, कोई मसला नहीं है क्लाइंब में, देन यू टेक द गियर अप एंड यू डू योर लैंडिंग गियर्स अप. दैट इज व्हाई इट इज positive 8 गियर अप. Service was good, but wrong one way, wrong altitude. It should not have been flight level 80. It should have been 8,000 feet. Runway was wrong. A pilot had to tell you you're using the wrong runway, which wasn't good. I don't know आपकी गलती थी या टावर की गलती थी, but I didn't like that. बाकी all good. Thank you for your services. सारी फ्लाइट से मैं कहो गोली मारो पबजी को. ये बात है भाई, ये बात की आपने. अच्छा, अच्छा जी. तो यह अंधेरा हो गया है ना, तो इसे लाइटें खोला. यहाँ भी होता है एक फ्लड की ऑप्शन फुल. वैसे लाहौर में बारिश हो रही थी शाम को, अभी मैं यहाँ से रुक गई हुई थोड़ी देर. तो है, व्हाट इफ पॉजिटिव क्लाइम ना हो? ओह, पॉजिटिव क्लाइम ना हो तो फिर आपको शायद एक याद होगा कि एमिरेट्स का एक 777 था दुबई में, जिसने गो अराउंड 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, जिसमें गो अराउंड किया था. पायलट्स की थोड़ी कन्फ्यूजन थी ऑटोमेशन मोड पे. उनने अपनी तरफ से टोगा के बटन दबाए थे, टोगा नहीं हुआ था, टेक ऑफ थ्रस्ट नहीं सही हुआ था. उन लोग इनिशियली पॉजिटिव क्लाइंब आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन ये नहीं देखा था कि स्पीड फॉल हो रही थी. तो उन्हें पॉजिटिव क्लाइंब करके गेव तो अप कर दिया था, लेकिन वो पॉजिटिव क्लाइंब करते करते एमिरेट्स का ही पे है. चलो अच्छी बात है. वैसे क्लाइंब स्टार्ट हुआ है, वो क्लाइंब करना स्टार्ट हुआ है, और जब स्पीड नहीं थी, थ्रस्ट आइडल था और गेव अप कर दिया था, तो वो गेव अप ऐसे जाके बैठे ज़मीन पे, ठग जाके लगा, जहाज़ पूरा बर्बाद हो गया था. तो that's what happens when you don't pay attention to things. A very small error, but it cost them their jobs. It cost Emirates a whole 777, or it exposed a lot of things in Emirates. So that's why you need to pay attention. अगर positive rate in case वैसे ना हो, तो द थिंग इज़ कि आप एटलीस्ट गेव अप नहीं करते कि अगर जहाज़, क्योंकि देखो अगर पॉजिटिव वेट नहीं है तो जहाज़ क्लाइंब नहीं कर रहा, जहाज़ क्लाइंब नहीं कर रहा तो जहाज़ डिसेंड कर रहा.
जहाज डिसेंड कर रहे हैं तो टेक ऑफ के बाद साथ आके दोबारा रनवे पर लगेगा, तो इसलिए कीप द गियर अप कि कुछ डैमेज बच जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ऐसे कि पॉजिटिव वेट ना हो अगर नॉर्मल कंडीशंस हो. That is that. 20 miles to top of descent. Let's turn the seatbelt signs on. रात हो रही है भाई, वो मुझे याद आ गया एलिसिटी है गाना, चांदनी रात पर्दे के बाद आई है. ये आवाज़ बहुत फजूल है, प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, पर खैर गाने सुनने का बड़ा शौक है, कवालियाँ सुनने का उससे भी ज़्यादा शौक है. I'm using a joystick and a yoke and throttle coordinate, but you can also use a keyboard. It's not an issue. V2 speed is the speed at which you V2 speed वो speed है जहाँ आप एक इंजन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, जो सेफ्टी नेट स्पीड बेसिकली कहते हैं उसको. सेफ्टी स्पीड को कहते हैं V2, तो दैट इज दैट. नबील वेरी नाइस. अच्छा, विंड डायरेक्शन हम अपसाइड पॉजिटिव क्लाइंब पे असर डालती है, उसे हम माइक्रोबर्स्ट कहते हैं, डाउन ड्राफ्ट कहते हैं, और हाँ जी फर्क पड़ता है, तो उसमें यू नीड टू इंक्रीज द नोज टू मैक्सिमम एंगल. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिसेंट 3000. अच्छा, विल बी यूजिंग ऑटो ब्रेक लो, क्योंकि हमने बेसिकली वो रनवे आपको मैंने दिखाया है कि एक सिंगल रनवे है, और हमने बेसिकली रनवे के एंड पे जाके बैक ट्रैक करना है, तो ऐसे 10,000 फीट रनवे लो इज़ गुड. We'll land on 36 at the back 18. We'll come back and vacate via Charlie to stand. That is that. Sure. Descent has started. Okay. शायरी का यही है, शायरी का टाइम नहीं है, ना ही मेरा मूड हो है फिलहाल शायरी का. Sorry, no शायरी for now. अब ऐसे क्या हो गया है? अच्छा जी. We'll be landing at 36. ILS 36 as I briefed you. And winds calm. Winds aren't calm, they're 10 at 4, but I'll use 36. Land in a 4 knot tailwind. All good. Extra fuel कितना रखा था? Extra fuel हमारे पास वापस इस्लामाबाद जाने तक का है. And वापस भी हम 30 minutes का additional reserve भी है. ये सब कुछ मैंने बताया था यार in the beginning of the stream. कितना fuel रखा है, कितना कुछ रखा है. शायद आप लेट आए होगे, मैंने सब कुछ beginning में बताया था. If you want, you can view it again from the beginning once it's finished. यस, सिमुलेटर डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट आप गूगल पे लिखेंगे सिमुलेटर का नाम प्रिपेयर्ड P3D, तो आपको आ जाएगा की वेबसाइट, वहाँ से आप खरीद लें. डाउनलोड शाउंड करना आपकी मर्जी है. तो दैट्स दैट. यू कैन मेक अ 180 ऑन द रनवे 2. यस आई कैन इंडीड. मे बी आई विल डू दैट इफ आई स्टॉप बिफोर. लेकिन मुल्तान पे एक चीज़ लिखी हुई थी जहाँ तक आई रिमेंबर कि मेक 180 turn minimum power at turn pads. It should be on a turn pad technically. We can do it on the runway also. I have no issue, but I would rather use the turn pad just to avoid any other issue. Chali. ATC at Multan? No, we do not. We'll land on Unicom, not an issue. Chali. चलिए भाई, नेक्स्ट संडे PI लेवी में इकट्ठे फ्लाई करेंगे कराची टू इस्लामाबाद टू कराची साहिब. यार फेसबुक पे ग्रुप है पाकिस्तान VACC के नाम से, वो आप उस पर पोस्ट करें, इंशाल्लाह लोग आ जाएंगे. वाई नॉट, मैं भी आ जाऊँगा फ्री होऊंगा तो. नो ATC, यस नो ATC.
एयरप्लेन मॉडल्स कहाँ से बाय कर सकते हैं? आप पाकिस्तान में नहीं मिलते अनफॉर्चुनेटली, बहुत कम ही रेडी मिलते हैं। तो कि आपको बाहर से आ जाए ना, स्पेशली दुबई से, दोहा के दुबई के तो एयरपोर्ट से मिल जाते हैं। बाकी को बाहर से आ रहे हो तो आपको मिल जाते हैं, बाहर के मुल्कों से ही मंगवाना पड़ेगा। सर मत पूछो, आपका इंस्ट्रक्टर वेटिंग का कोई प्लान है? हाँ जी है, लेकिन अभी नहीं है, और ना ही पाकिस्तान में है, बाहर भी है। तो चलो इस पर सून वीडियो आएगी, ऑल डिटेल्स एंड एवरीथिंग। कौन सी वेबसाइट से ट्रैफिक देखते हो? इसकी आप बात कर रहे हो, ये जो ऐप है इसका, इसकी अगर बात करें, दिस इज़ वैट्सपी, VATSPY, ये लिखा हुआ है, जूम करके देख लीजिएगा, वैट्सपी। ये आप डाउनलोड कर लें फ्रॉम गूगल, तो इस पर वेदर आ जाता है। आप देख सकते हैं सब ये रूटिंग फॉलो कर रहे हैं, ये दो तारिक भाई एंड एबल इन 222 डायरेक्ट आ रहे हैं। यहाँ की है ही डायरेक्ट रूटिंग वाली होगी, लेकिन डायरेक्ट रूटिंग में हाल से बेल्को से थी जो यहाँ से गुजरनी चाहिए। बट कई बार मज़ा आएगा क्योंकि ये ना कॉन्फ्लिक्ट बनेगा विदाउट ATC। लेट्स सी क्या बनता है। अच्छा, A320 A380 सिर्फ एल्सफॉल्ट प्लान कर सकता है या कॉन्क्रीट पे? आई डोंट नो, नो आइडिया। Which simulators do airport officials use in motion simulators? या उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है, they don't use any simulators like these, they say own software. Is ILS TME arc available at Mike Tango? No, is no arc, it's a direct straight in approach. टैक्सी टेस्ट टूल से क्या होता है? टैक्सी जहाज से होता है, टैक्सी कौन से टूल से होना है भाई? अच्छा शुजा भाई, प्लीज से हाई टू मोहम्मद। ओके, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे, थैंक यू सो मच। Pakistan 556, yes. No, it is at Multan, yes. Tariq Bhai is taking a little shortcut, yes, I saw. Which aircraft would you prefer, 330, 320 Neo? Yeah, it depends. Both have different functions. 330 is a long range, medium to long range. 320 is a short haul. Um, दोनों are different aircraft. I believe flying wise इतने different नहीं, क्योंकि obviously Airbus के सारे जहाज में जो Airbus systems है, they are nearly the same, which is good. खैर, अच्छा जी। ATC के बगैर कैसे लैंड करेंगे? खुद ही लैंड करेंगे यार। बेसिकली वैटसिम पे हर वक्त आपको ATC नहीं मिलती, तो यू नीड टू आल्सो प्रैक्टिस लैंडिंग विदाउट ATC, which we're going to do today. So we'll transmit on Unicom in a bit. ILS GME क्या होता है? ILS GME एक लैंडिंग का प्रोसीजर होता है। मैं समझाऊंगा, सियालकोट के चार्ट्स में होगा। बल्कि मेरी भी वीडियो है, क्रॉस कंट्री नेविगेशन फ्लाइट टू सियालकोट पाकिस्तान, उसमें भी है। आई बिलीव, मैं याद तो यही पाया है कि ILS GME ही थी इस वीडियो में, तो यू कैन सी दैट एज वेल। अच्छा जी, ओके, अब क्या करें? लाइटें तेज करें? See, floodlight, if anybody is interested, you can also turn the floodlights on, dome light जिसको कहते हैं यहाँ से। तो let's do that so that you can also see properly. एक और चीज़ जो बोइंग में नहीं है और एयरबस में है, this is LS, so मैं नाम भूल गया हूँ, मैंने पढ़ा था longitudinal lateral कुछ था, I don't remember क्या था, if anybody knows let me know. इससे basically आपके स्क्रीन पे, आपके PFD पे ILS की indications आ जाती हैं, तो you need this to turn on before you, वरना आपकी ILS की इंडिकेशंस नहीं आएंगी यहाँ, और वैसे आपको बता भी देगा कि LS ऑफ है। ठीक है, वी आर क्रॉसिंग मोल्टा नाउ इन रूट दीबा। अच्छा से क्रॉसिंग मोल्टा इनबाउंड बीबन से दीबा। आपको याद होगा मेरी जो अपनी वीडियो थी मुल्तान वाली, उसमें भी हम मोल्टा और दीबा से ही गए थे। तो ये है ये सीन। पासिंग लेवल 1905, विल डिसेंडिंग 3000। अच्छा, ATC नहीं है। Multan traffic, Assalamualaikum, Airblue 502 with you. We are descending level 190, inbound Deepa for the ILS Zulu 136. आवाज़ रिपीट क्यों हो रही थी यार? अच्छा, फ्रीक्वेंसी आई थी इससे। अच्छा जी, Mohammed is coming to Airborne Aviation. Great, you can start flying before A level. Yes, for PPL you can.
Plans for the future, you'll get to know soon, inshallah. Can you fly fighter jet or cargo airplanes? Yes, you can. Difference between ILS Yankee and Zulu दिखा देता हूँ. काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं ILS X-ray Yankee Zulu में क्या फ़र्क है. Zulu में आप देख लें. Zulu is starting from Kevim and straight in approach. ठीक है. ILS Yankee is a whole different procedure. Starting overhead Multan VOR, turning outbound, heading 205 for 9 miles and turning inbound. That is the difference between ILS Yankee and Zulu. Okay, G. I'll be answering less questions because obviously I need to focus on landing now. But क्या पूछा जी? Flying from Pakistan or abroad? I prefer abroad. Bahrain TD2, yes, Afnan is here. A320 maximum level is 3900. You can fly a fighter jet, yes you can. Please don't ask the same question again and again. Do not spam, otherwise you will be removed. Okay. अच्छा जी, navrat मैंने चेक करना था कि 1167 you can see look VOR frequency and ILS frequency 110.3. Good. Can you make a video on how one can buy his own plane and get PPL? मैंने video बनाई हुई है. Please do some searching on my channel. You'll find it over there. The video is already made. Can I super chat? Yes, you can. You'll have to use. You'll have to. If मुझे नहीं पता पाकिस्तान में बाहर में, but if you can't see it, you use a VPN and you'll see the option for super chat, and then you can do super chat, or you can become a member. That is your choice. Tower is online at Multan. Okay, अभी आ गया होगा. Yes, आ गए हैं. वेशम ही आया है. Good. 119.1 लगा के रख लेते हैं. Nav data out of error can only be fixed by updating your nav data from AVAC. या आप navigraph से कर लें या torrent से कर लें, आपकी मर्जी है. This is a very sporty turn. Yeah. So we'll turn a bit. It's a 90-degree turn completely. So we'll turn a bit. Before. Super chat not available in my area. Use a VPN. For memberships also use a VPN. Buying a member subscription for your channel offer. You can see I've added all the details. Basically, member number one, you'll get priority over here in the live streams. Number two, you'll get more access. You'll get exclusive access to content before. So, like my videos are released on Saturday, so you'll most probably see it by Friday if this video is ready. Apart from that, you can request special videos if you want, depending on which level of membership you have. आप मुझसे भी बात कर सकते हैं डायरेक्ट. आप मुझसे वीडियोस भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके स्पेसिफिक टॉपिक्स पे. आपको शाउट आउट्स भी मिलेंगे, जैसे नबील भाई को यहाँ मिलता रहता है हमेशा हर वीडियो बाद. Nabil Bhai is a subscriber and he regularly buys the memberships and donates to my channel, so I'm very thankful to him. You can check out his page Nabil Vlogs on Instagram and YouTube as well. Really great guy. So as you can also do that yourself. Um, that is what a membership offers. So to do that, use a VPN or do that. Okay. I'll be soon also introducing Patreon. Patreon के through भी you can become a member. वो soon introduce होगा. Obviously जो लोग donate करेंगे और help करेंगे, they'll also get more priority over those who don't. So that's something that will be coming soon. I'll make more details in new videos. अच्छा जी. Sunset, beautiful. Now the speed is going back to 250, so we'll use our speed brakes. So do the speed brakes. These are the speed brakes. Take it. To help reduce speed, to bring our speed down quickly. That is the city of Multan.
Okay, so I won't be answering any more questions. Okay, we're going to focus on the landing phase now. Below 10,000 वैसे ही should be a sterile cockpit. तो खैर flaps 3 landing and hopefully the landing will also be smooth ताकि आप लोग इज्जत बचा लें मेरी, मैं अपनी भी इज्जत बचा लूँ. Okay. अच्छा, nice angle during the turn crossing the bar. Speed brakes go retracted. Spoilers are armed for good. We passed 10,000. We turn the lights on. अब इसका एक इशू है FSLab के 320 का, तो मुझे अब तक नजर आया है कि बेसिकली मैं यहाँ से लाइट्स ऑन कर भी लूँगा ना, मैं लैंडिंग के बाद देखना लाइट्स ऑफ ही रहेंगी. जब तक मैं ऑन ग्राउंड उनको रीस्टार्ट नहीं करूँगा ना, ऑफ ऑन करूँगा, वो नहीं चलेगी. तो बाद में लैंडिंग पे अगर आपको बत्तियाँ ना नजर आए जहाज़ की, तो मुझ पे ना चाहिएगा कि मैंने लाइट्स नहीं ऑन की थी, मैं कर देता हूँ, लेकिन जहाज़ में कोई इशू है इन द सिमुलेटर कि वो नहीं चलता. ठीक है. अच्छा, we are on the descent profile, which is good. We will be taking flaps 3 again, flaps 3 landing, and we'll be rolling to the end of the runway. We'll backtrack with Gateway Charlie to the stand, whichever stand ATC gives us. बाकी सही है, all good. Islamabad Multan traffic able 502 inbound Mike Tango 411 passing 75 descending 3000 ILS Zulu runway 36. मुझे बाकी जहाज़ नहीं पता कि फ़िलहाल किधर है, उनकी ज़रा टेंशन हो रही है, नज़र भी नहीं आ रहे. ठीक है, आज तो मैं ऑन ही है वैसे. खैर यहाँ से देख लेते हैं. तो ये टर्किश है, 8000 में 10,000 पे था, ये ILS इस्टेब्लिश हो रहा है. सही तो लगा मुझे फ़िलहाल. लेट्स सी क्या होता है आगे. Okay, 6,000. I believe the transition altitude was level was 80. I mean, check नहीं किया, very bad Shuja, we should have checked that. It's 60. We'll set the QNH, and the QNH is 1001 as we briefed. Wind has become calm, which is good. हम enter कर देते हैं यहाँ, wind calm. Wind is calm, and that's that. Okay. Open descent. जो बोइंग में फ्लाइट लेवल चेंज होता है, फ्लाइट लेवल चेंज व्हाट इज, oh, it's open descent in the 320 330s and 380s. ठीक है, we have an aircraft here about to intercept the ILS and we are behind him. It's 10 miles ahead, so shouldn't be an issue. What I'm going to do is I reduce my speed here क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा कि हम उस पर टकरा जाएं और या गो अराउंड कर जाए. मुझे कोई मूड नहीं है मेरा गो अराउंड करवाने का. अच्छा जी, तो once we come to speed we'll take क्या हुआ है, Multan Tower please contact me. Okay जी, sure. चेंज हुई है फ्रीक्वेंसी? नहीं हुई, नहीं हुई. .com 1119.1. Multan Tower, good evening. Airblue 502 with you, passing 4,000, descending 3,000 for the ILS Zulu runway 36. Flaps 1. Airblue 502, Multan Tower, hello. Continue approach runway 36 and maintain low approach speed. Roger, minimum approach speed, continue approach runway 36, Airblue 502. Let's take it to 180. Airblue 502 and QNH 1001. 1001, Airblue 502. Pass this, flaps 2. वैसे ग्रीन डॉट पास करते हैं, लेकिन चलो भी. देखो ये जहाज़ है, हम टकरा जाएंगे, हम तो अपने आप को सिर्फ ये जहाज़ नज़र भी आना चाहिए, वो होगा सामने.
Airblue 502 will be making 1362 just behind the aircraft ahead. Airblue 502, Roger, can you make a right orbit? We'll do a right orbit Airblue 502. Thank you so much. Let's do a right orbit. Orbit is basically एक गोल चक्कर करना क्योंकि वो बहुत पास है तो टिकाना तो हम नहीं चाहते उसमें तो let's do a right orbit क्योंकि अगर रनवे एक होता ना तो मैं समझ सकता लेकिन क्योंकि मसला ये है कि अगर रनवे वैसे ही है क्योंकि रनवे सिंगल है और बैक ट्रैक होकर विकेट होगा तो आई डोंट वांट टू रिस्क द फैक्ट वी हैव अ गो अराउंड ठीक है Sin 465, taxi to the stand of your choice. Via taxi, Foster Alpha. वो रनवे है सामने Taxi departing of Michael. Sin 465, that's affirmative, sir. Sin 465, taxi to the stand of your choice, sir. Airblue 502, now you can exit the orbit and you can continue approach with a low approach speed. Airblue 502 Roger. फिलहाल तो लाइट्स ऑन है which is good. Great. लो कंट्रोल ऑनलाइन वे टाइम पे लो कंट्रोल फाक है फिलहाल तो चलो खैर ओके अच्छा जी great ILS तो we do approach arm cat 32 dual and 2300 will descend okay नहीं sorry 3000 ही maintain करना है till after crossing Kevin forgot sorry okay जी cat 3 dual autopilot 1+2 and that is checked flaps 2 already flaps 3 landing again I'm telling you flaps 3 landing बाद में ना कहिएगा flaps 3 क्यों हो रहा है हम flaps 3 landing करेंगे वैसे क्योंकि मुझे शॉक हो रहा है direct to Kevin पे speed 220 and 3000 होनी चाहिए which is good so we will be नीचे आएगा after crossing Kevin will also descend 3 will the 3000 भी intercept कर तो सकते हैं वैसे ये क्या कहता है ये कहता है 3000 2300 descent उस पे कर लेते हैं Lockstar means localized established because I captured it. We are 11 miles from touchdown. Airblue 502, no speed restriction for you. 2500. Free speed at 502 and we are coming up localizer with 36. Airblue 502, roger, continue approach to your number 2. Continue approach at 502. Okay, descending 2300 and we'll take flaps. Give down करना है flaps 3 लेने लैंड कर देंगे सीधा सीधा वो रनवे है अभी आप देखिएगा ये भी मज़े की चीज़ है ऑन P3D एटलीस्ट कि अभी विजिबिलिटी अच्छी है अभी थोड़ी देर बाद कम ही देखना कम हो गई दोबारा पता नहीं क्यों होता है एक्टिव स्काई क्या कहते हैं कभी कभी ना बट खैर what we will do is we will take gear down एंगल से दिखाते हैं gear down आपको gear down Airblue 502, expect late landing clearance. Airblue 502 gear down and flaps 3 we get managed speed
and gear goes down, gear down. We have 3 greens, which is good. Flaps 3 ले लिए हैं मैंने, reducing to final cruise speed, and runway turn of lights on, nose right takeoff on. Okay. Okay, landing checklist. Landing checklist. Landing no blue. Landing checklist complete. Okay. Airblue 502 surface winds calm, runway 36 clear to land. 36 clear to land, and 502. Okay, G, in case of Mr. Boots, straight ahead 3000. I believe it was 3000. It was 2000. My bad. Okay. Can see the runway ahead. 1000. Checked, stable. Manual thrust. Autopilot off, checked. Guess the landing weight. क्या आएगा? Checked. Land. 100 above. 300. Minimum. Continue. $100. 50, 40, 30, 20. Retard. Retard. वो गंदा गंदी लैंडिंग हुई है यहाँ से ना हाँ फ्लेयर हो गया वो गंदा 5. फुल बाउंस हुआ ज़्यादा सही थर्मल पर brakes off. Very bad landing. Not expected. पता नहीं क्या हुआ एंड पे. हालांकि I was coming on good. Bounce हो गया जहाज. खैर. Go to the end. Vacate at the end. अच्छा जी. Not good at all. But खैर चलता है simulator है कोई नहीं. Airblue 502, hello, welcome to Multan, vacate right to enable. Request to backtrack and vacate via Charlie Airblue 502. Airblue 502, backtrack and vacate runway 18. Backtrack vacate via Charlie Airblue 502. Okay, हाँ जी यार भाई देखो क्या हुआ है कि पिच एंड पे ज़्यादा पिच की वार्निंग भी आ गई थी मुझे समझ नहीं थी क्यों आई है हुआ ये है कि एंड पे द एयरक्राफ्ट एंगल वाज ग्रेटर ठीक है एंड व्हाट हैपेंड इज इट टच डाउन west नहीं हुआ it touched down and it bounced again वैसे the bounce procedure is whenever you have a bounce go around immediately लेकिन क्योंकि it was stable and मेरे हाथ में control था speed भी थी तो I decided to continue and do another touchdown happens it shouldn't have happened in this wind conditions at least but it happened Bye bye sir. Pakistan 556, passing 5,000 for 3,000. Pakistan 556, Multan Tower, hello, continue approach runway 36, QNH 1001, and report when established runway 36. Report when established runway 36, QNH 1001, Pakistan 556.
flaps up. If flaps 30 degrees above, flaps 1 होंगे. Sure. We're gonna vacate via Charlie and do that. Yes, indeed, any landing you can walk away from is a good landing. I believe that. हम समझ नहीं, it was a stabilized approach. मैंने flare भी time पे कर दिया था. पता नहीं क्या हुआ. खैर, I'll review it later and see what mistake I made. तो मसला तो वही होगा. Not to worry at all. We are on the ground. We are safe. Pakistan 556, reduce your speed to the minimum landing speed. Minimum landing speed, Pakistan 556. ये तेज टैक्सी करते हैं, पीछे जहाज आ रहे हैं. मैंने रोका हुआ सबको. AP available, good. कहाँ से भाई मेरे टाइम पे. AB 502 to confirm vacate by Charlie. Airblue 502 APMC, you can vacate by Charlie. By Charlie 502. Airblue 502, if possible, can you vacate by hotel? Will do, AB 502. Thank you so much, sir. This is hotel. Break a bit. Pakistan 556, no speed restriction for you. No speed restriction for me, Pakistan 5. Gate by hotel and the lights go off. W502 vacated by hotel. W502, thank you, and that is the stand of your choice. Stand of choice W502. Pakistan 556, establish RS runway 36. Pakistan 556, service winds come, runway 36, clear to land. Runway 36, clear to land, Pakistan 556. Action, that was 36. 36, Pakistan 556. Stand 4 पे जा रहे हम. We have a new subscriber, very nice. Light Jahaz. So my membership names are Light Jahaz, Medium Jahaz and Heavy Jahaz, so you can do that. It is what it is. Indeed, it is what it is. Thank you for the subscription, SM Bros. Good to see you. Welcome to the channel. Pakistan 556, traffic is 1 o'clock at 8 miles to put the traffic inside. It is Airbus A320. We have the traffic inside Pakistan 556. See Multan International Pakistan Airport. 556, roger. Taxiing stand 4. We have to also turn the TCAS off, which I forgot. We will turn it off now. And weather radar also goes off. चलो यार गेट 4 फजूल है गेट 3 पे चले जाते हैं कोई Tower, hello, मसला नहीं। Pakistan 651 descending 4,000 feet Yes, direct we Mike heard you. Tango to take up the hold at the VOR. Pakistan 651, roger, turn right immediately, sir. Right immediately, Pakistan 561. Let's turn the lights off. Pakistan 56, cushion for 651, continue as well.
Continue Pakistan 651. Parking brake on, APU is on, engines go off, and fuel pumps go off. Beacon goes off. We are at Multan. Welcome to Multan. Let's ask for deboarding. Request deboarding. अभी जेट पे real life में तो है. यहाँ पता नहीं क्यों नहीं है सीन में. I just request deboarding. And गाड़ियाँ आएंगी, गाड़ियाँ लगेंगी, दरवाजे खुलेंगे और हम विकेट करेंगे. Welcome to Multan International Airport. We have come from Islamabad. Approximately 1 hour 30 minutes got total time, including from the start of the stream. But it's all good. I can hear my voice in somebody's call. Nice. Multan Tower, hello. Achha. Continue approach runway 36, QNH 1001, report established. That is a flight short. You saw how an Airbus is flown, and how to fly an Airbus, how to set up the Airbus FMC, how the systems go of the Airbus. सब कुछ आपने देख लिया. You can see short flights. You need to be prepared completely. You need to do your briefings, your debriefings. On a debriefing, we'll see what went wrong on the landing. But you need to make sure that everything is done properly. You need to make sure you're familiar with the procedures of the airport. अगर मेरे पास choice होती तो मैं शायद 18 की भी approach कर लेता. मैंने एक VOR approach try करनी थी. I tried yesterday in Bristol. कल मुझे मिली नहीं वहाँ. मैंने उनसे NDP ILS मांगी थी लेकिन उन्होंने मुझे दी नहीं. So that was that on VATSIM obviously. But khair, this is the stream. Welcome. Thank you for watching. I hope you enjoyed it. Inshallah, I'll be trying to do more streams. I'll do another one शायद in midweek. Midweek में शायद stream में करूँ. I'll let you know the details. वो शायद Facebook पे होगी तो stay tuned for that also. And that will be somewhere in European airspace. I would like your suggestions. I would like personally I like to do more flights in Europe. I do in Pakistan only for the streams when I don't do it. I use it in UK or other thing. But okay, thank you so much for watching, for staying throughout this short stream. It was great. And see you soon, inshallah, in next stream. Thank you. Allah Hafiz. Pakistan 361, can you make a left orbit right now?